तो सॉरी सॉरी स्टार्टिंग में खिचखिच, क्योंकि आज खिचखिच जैसी बात है। हमारा ग्राफिक्स कार्ड फिर से RTX 3090 हो गया है डैमेज, तो हमने फिर से लगाया 1050 Ti। तो वाइल्ड वेस्ट व फ्रोज़न वाइल्ड जो है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं RTX नहीं, हमारा GTX 1050 Ti पे। तो थोड़ा ग्राफिक्स क्वालिटी इसकी 4K नहीं होगी, HD होगी, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सॉरी फॉर दैट। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड ख़राब होने से हमें तो सीरीज़ तो कंप्लीट करनी है। वैसे मेन स्टोरी हमने कंप्लीट कर दी है, लेकिन ये DLC भी अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते आगे। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में फ्रोज़न वाइल्ड के DLC के। तो चलो शुरू करते हैं। तो DLC यहाँ से शुरू होगी। अब ये एरिया अनलॉक हो चुका है, तो चलो वहाँ पे जाते हैं, बढ़ते गेम में आगे। तो उधर जाना है हमें, तो कैसे जाए यहाँ से? तो मेरे ख्याल से यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा, ये माउंटेन पे। गेम अच्छी चल रही है, सिर्फ 4K नहीं है, HD है। ओके, कोई बात नहीं, इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं आ रहा है। वैसे भी इंडिया में 4K चलाना इंटरनेट पे बहुत मुश्किल है। You don't look like you know this path, Hunter. Seems you're a long way from anything. Where does this trail lead? For me, it leads south, away from the Banuk, past the Grave Horde. Banukai, watch over me. This is the quickest way out of the cut, instead of going all the way through Oseram territory. And take it from me, you want a quick way out of the cut. I haven't even arrived yet. Why would I want to leave? Strange machine attacks? A curse on the mountain? It's enough to make me look forward to Meridian. You're going to Meridian. Yes. I was named an envoy to the Karja King's court. No one else wanted to do it. It's not so bad. I just recount the songs from Ban-Or, and the Karja draw their funny little glyphs. I tell them of the machine's growing anger, and the Karja King still offers aid, even though he knows the Banuk will not accept it. What kind of strange machines? And what kind of curse? Machines tougher and crazier than anything in the south, I heard. And smoke comes off the mountain like a funeral pyre all day and night. But like I said, I just pass through now. What sort of place is the cut? It's on the edge of everywhere. The edge of Ban-Or, the edge of the mountains, the edge of other tribes' territories. It's suffered in the war with the Karja. But it suffered before that too. Life there is a test to survive out on the edge. Not exactly homey. I can see why you'd want to move on. Home is what you carry in a roll on your back. Well, thanks for the warning. I'm curious about these machines, though. Then the warning rolled off you. I understand. You adventurers are all alike. Good luck. ज़ीरो डॉन प्रोजेक्ट के तहत जो ये बनाया था, उन्होंने जो AI बनाए थे वो सब अलग अलग हो गए हैं, और उसमें से एक AI था जो मशीन्स बनाने का काम था उसका। लेकिन वो नाराज़ है क्योंकि इंसान जो है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से उनकी हंटिंग कर रहे हैं, इसलिए वो नाराज़ है, इसलिए वो खतरनाक What are you doing, Aloy? ये बना रहा है। This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your task. Surprised you're still checking up on me. I thought you had moved on. Well, forgive me for still being concerned with the fate of the world. I was thinking, Rost used to tell me stories about the Banuk and their shamans, and how they thread blue cables through their skin. Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's not the past that concerns me, Aloy. It's the future. Or possible lack thereof.
which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you do as you wish. Touchy. ओके साइरस का क्या नाम है उसका? साइलेंस। वो चाहता है कि हम बैक मिशन पे जाए। मतलब ये स्टोरी जो फाइनल बैटल है उससे पहले कंप्लीट करनी थी, लेकिन हम फाइनल बैटल की बात कर रहे हैं। ओके चलो चलते ठंडाई में। ओके कहाँ पे आ गए हम? चढ़ गए हम माउंटेन पे कैसे तर के। पहले यार इस पे चढ़ते हैं, मतलब हमें पूरा मैप रिवील हो जाएगा। चलो आज तो उतना काम कर देते हैं। ओके अबे उसको देख लिया हमें। This one's a new predator. You can see the heat coming off it. नया है ये। चलो उसको मारते हैं। नहीं मारा है किसी। ओके उधर जाना है। चलो और चढ़ना है ऊपर। यहाँ पे तो पहले जाएंगे। चलो क्या बजा रहा है ये? चलो देखते हैं। Okay, that's a welcome, I guess. ब्लेंडर बोला हुआ हमको। You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb. नहीं यार ये सेव पॉइंट नहीं है। चलो देखते क्या चल रहा है यहाँ पे। You made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. जो फॉरबिडन वेस्ट आने वाला है उसकी स्टोरी यहाँ से Smoke आगे rising from the होने mountain. वाली है। And the village, too. What's it for?
वाह, क्या खाने को है? मच्छी है यहाँ पे। That our hunters knew this. मेरे को खानी है वो मच्छी। Trust Araya, they say. Should return to us. Must be something big going on. Most of the village is We moving still towards have that Aratak smoke. to guide us. तो चलो यहाँ पे करते हैं गेम को सेव एक बार। Okay. Get ready for a rare sight, Nora. Bergrand, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead. But not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the daemon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies are prey. The daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Araya, spouting on about spirits and daemons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Araya vanished, I thought the crazy might have gone with her, but no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. A land cold enough to crack teeth, filled with wild animals,
You think they'd accept a little reasonably priced aid? Don't believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. And Aurea is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum. And they believed him. But you don't. Look, I don't know what Aurea found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon, or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Aurea's not around to explain. She took off, and no one knows why. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Werik chieftain. His voice carries a lot of respect. Not that you hear much of it. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Aurea came to town with their Werik, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then, he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Weriks about, Bergrand? Some sort of tribe within the tribe? Yeah, not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold tryouts. Prove your best at something and you might get a place. Some Weriks come and go. Some last as long as metal. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Weriks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. Well, here's the sure thing. Each Werik has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good, except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Aurea. A great prophet is coming, they said. I heard prophet. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through to enough of them. We could really put this place on the map. Or at least on a map. We? Me and my daughter. My assistant, Varja. My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both, how do I put it? Women? No. Independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk camp. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin? Like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered. Like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave. Or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Aurea's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. I want to know more about this daemon. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Aurea. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rats. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures.
Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. I wonder if our talk can tell me more about Araya. I know my Thunderstrom. place in the barrack. Maybe worth a shot. These lands are harsh. You need to stay vigilant. I do not want to hear this talk from you again. Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. अरे बात करना मुझसे. Outlander. Offline. I suppose you wish to speak? There are other Weraks in Song's Edge too? Yes. The village has its own lie for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last, until the Karja seek war again. Araya knows about this Damon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an Outlander's. This Damon you talked about. If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate. Did your Werak come from this place? No, he rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the demon. But I was born here and stayed to fight the Karja when others retreated into the mountains. A few of my old warriors remained with me, those who survived. You're set on going back to the mountain? I have put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say too much. Well, I guess that's it then. Good. I prefer deeds to words. Right. I waited by the kill all morning, but my shaman never arrived. बहुत लोचा चल रहा है यहाँ पे. मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रही है. Zakuli is a prick. देखते हैं मैप में क्या है ये. लेकिन उससे पहले चलते हमारे यहाँ इस लोकेशन में. साइड मिशन इसमें भी नहीं करने वाले हम. इसमें सिर्फ हम मेन मिशन पे ही फोकस करेंगे. चलो. मतलब ये तो ऑलरेडी साइड मिशन है, DLC है. उसमें भी हम साइड के साइड मिशन पे नहीं करेंगे. ओके. तो पहले वो टावर पे चढ़ के आते, मतलब पूरा मैप रिवील हो जाएगा. उधर कैसे जाते हैं? यहाँ से जंप लेके जाए क्या? नहीं कर सकते यहाँ से. इधर से कोई रास्ता होगा. नीचे उतरना है भाई. Okay, if I want to learn more about how this Damon affects the machines, I've got to find Araya. To do that, I need to talk to her apprentice, who followed the river north. आ गया मैं तुम. चलो. बहुत ही जंगल है यार यहाँ पे. कुछ है क्या? लोग हैं अपनी जगह पे. चलो. Going down. ओके. इधर से जा सकते हैं. Chill almost feels like sunburn. चलो. ये रास्ते से ही जाते हैं आगे. वहाँ पे जाना है हमें. ये देखो. अरे ये तो टूटा हुआ लग रहा है मुझे, गिरे हुआ. दूर से तो ऐसे दिखाई दे रहा है.
Tallneck? What did it take to knock one of those over? They're built to last. Tallneck. Okay. Sides. Vended cam. चलो वहाँ पे जाते हैं, चलो Berglund said Araya's apprentice went north of the river. ग्राफिक्स में यहाँ पे चेंजेस तो मुझे आराम से दिखाई दे रहे हैं। Oh shit. वहाँ पे उनको मारना पड़ेगा मुझे। Encased in ice. The scavengers have just gotten started. फिर इसको मारते हैं। उनको शॉक हो गया। गया बे। That's the last of the scavengers. Should scan the Tallneck. See how deep the damage goes. चलो। Looks like the scavengers ripped out 3 major parts. If I could bring them back, maybe I could even reactivate it. Get at what's inside its head. चलो। इसके पार्ट खराब हो गए हैं इसलिए ये चल नहीं पा रहा। चलो इसको चलाते हैं अभी। मतलब ये एरिया हम स्कैन कर सकते हैं। आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। चलो। मतलब पता चल जाएगा हमें क्या क्या खेलना है क्या क्या नहीं यहाँ पे। इधर है इधर है। Let's go. मिल गया क्या? नहीं यहाँ पे दूसरा वहाँ पे नज़दीक है। ये यहाँ पे ये
से मारने में मज़ा आता है। वो तो निपट गए। Part seems intact. पार्ट मिल गया हमें, चलो दूसरा पार्ट ढूंढते हैं। लेट्स गो। Oh shit, shit, shit. क्या है ये? टॉर्चर। इसके ऊपर से मार सकते क्या? इतने ठंडी में गर्मी तो चाहिए थोड़ी। One of the tall next parts. It's heavy. तो मिल गए दो पार्ट। अब फाइनल पार्ट लेने चलते उधर, चलो। लेकिन यहाँ पे कोई तो हमारा इंतजार कर रहा है। कहाँ है वो शाना? तो करते खत्म, चलो। गया वो अंदर। इधर जाना ऊपर ही। साइलेंट किक क्यों नहीं आ रहा? ओके, ओवरराइड का कुछ तो भी अपग्रेड होना चाहिए यार। वो मैं नहीं किया मैंने। ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे इन दोनों को लेते हैं।
अबे किधर है? मुझे कुछ दिख रहा नहीं यार। ग्राफिक्स कार्ड तो काफ़ी खराब हो रहा था तो मुझे दिखता नहीं। The stomach part's still in one piece. ओके, मिल गया हमें वो एक्यूमुलेटर। क्या है वो? चलो खतरनाक, एकदम स्टाइल से जाता है नीचे। खतरनाक, लेट्स गो। करते इसको रिपेयर। चलो, Well, that fits. Sure hope it works. एक हो गया। इसको यहाँ पे खराब हो गया। Well, it's in better shape than it was. चल चल चल, तेरे को जिंदा करना है भाई। मेरे को देखना है यहाँ पे क्या क्या है। वो किधर गया वो? ये रहा। Right. किसने मारा इसको? Nothing wrong. At least no one's watching. That should wake you up. चल 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 चल, शुरू हो गया, शुरू। Easy. Right, it's never easy. ओके, तो अब इस पे चढ़ना है, लेकिन वो ओके, चल चल चल। Atomic again. I'll need to find higher ground. This should be a good spot for jumping onto the tonic. अरे यार है, लेकिन वो घूम के आ जाएगा वहाँ पे। उधर आगे एक पॉइंट है, उससे पहले जाना चाहिए हमने। रुक गया रुक गया रुक गया, नहीं नहीं नहीं। Shit यार, ये दोनों के वजह से हो गया। क्या करता हूँ यहाँ पे, घूम फिर के तो आ जाएगा ना वहाँ पे। यहाँ अंदर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। और कौन सी जगह है क्या? नहीं यार, ये क्या है? यहाँ पे भी एक मिशन है, वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले इस पे चढ़ना है मुझे। खाना बज रही है अलॉय को। करते हैं यहाँ पे वेट उसका, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद चढ़ जाएंगे यहाँ से। किधर है लेकिन वो? कितनी बर्फ गिर रही है यहाँ पे। ये रहा उधर, ऐसे आ जाएगा ये चलते चलते, तो चढ़ जाएंगे इसके ऊपर वहाँ से। निर्मल निर्मल। ओके,
आजा। क्या क्रिएटिविटी लगाई है इस गेम में, खतरनाक क्रिएटिविटी। फ्रोजन वाइल्ड। Blink, my eyes will freeze shut. यस। All right. Now I just have to reach its head. ओके, चलो 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 एलॉय। Irving said Array's apprentice went north of the river. I'm going to. ओके, तो कर दिया हमने यहाँ पे मैप को रिवील। तो ये रहा पूरा मैप। तो क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ तो भी है, यहाँ पे कुछ तो भी है, यहाँ पे गांव है तो ओके। तो यहाँ पे रूइन है, मतलब कुछ तो भी है यहाँ पे भी। छोटा मैप है, कर देंगे जल्दी से जल्द कंप्लीट इस मिशन को भी, डीएलसी को भी। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे जाते हैं, नहीं यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके करते हैं गेम को सेव। चलो क्योंकि वहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, सेव नहीं, जा नहीं सकते। ये देखो मैप में यहाँ पे ट्रैवल, फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते हम। कहाँ पे हो? यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे जाने का है। तो और एक तो घूम रहा है यहाँ पे। तो शुरुआत कर दी है हमने फ्रोजन वाइल्ड की। तो क्या हुआ, हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, हमारा वो बार बार साथ छोड़ रहा है हमारी। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम गेम खेल के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे युद्ध चल रहा है। Here we go. थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मार दिया उसको। तो करते हैं यहाँ पे गेम को सेव। एक बार मैन्युअली सेव करते हैं यार। ओवरराइड न्यू स्लॉट नहीं आ रहा है, ओके जान दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भले तूफान आए या कुछ भी आए, इस चैनल पे वीडियो आते रहेंगे। अभी यहाँ पे हम ठंड में जम रहे हैं और हमारा ग्राफिक्स कार्ड ख़राब हो गया है, फिर भी हमने पुराने ग्राफिक्स कार्ड पे ये गेम HD में प्ले करके कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये सीरीज होगी कंटिन्यू। 18 Feb से फॉरबिडन वेस्ट भी आने वाला है इस चैनल पे, तो वो उसे भी मिस मत कीजिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।